what do we need to know about graphs of functions and O-level maths? So first of all, आपको कुछ basics पता होने चाहिए. The shapes of the graphs of some common functions, common types of functions, right? तो पहले सबसे पहले simplest case कौन सा है? Straight line. Straight line के graphs आपको पता होने चाहिए, ठीक है? अब straight line की different forms हो सकती हैं. You can have horizontal lines, you can have vertical lines, right? आपके पास horizontal lines भी हो सकती हैं, vertical lines भी हो सकती हैं, और आपके पास slanted lines भी हो सकती हैं, जिनका जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे जाते हुए they are either increasing or decreasing. So let's talk about this first one, for instance. So this first one, जो यहाँ पे left side पे नजर आ रही है, it's a horizontal line, right? It's a horizontal line. इस तरह की lines की equation किस form के अंदर होती है? It's y equal to something, right? Because y की value इसके अंदर constant होती है. नहीं, y की value क्या होती है? Constant होती है. So it's y equal to something. So if you look at this graph here, look at this graph here. यहाँ पे क्या है? The value is 3. Y की value 3 है. So इस line की equation क्या होगी? It's going to be y equal to 3. This equation is going to be y equal to 3. So every horizontal line, any horizontal line that you have, it has equation of this form, y equal to something. ठीक है? ये हमारी एक type of straight line होती है. अच्छा. We have another type of straight line. That's a vertical line. So this red line that you see here, is a vertical line, right? Vertical line की equations हमेशा इस form के अंदर होती हैं. X equal to something, right? That's x equal to something. That's how vertical lines look like. Okay. अब यहाँ पे x की value क्या है? This is -4. तो यहाँ पे equation क्या हो जाएगी? It's going to be x equal to -4. That's x equal to -4. ओके तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है ये राइट साइड पे जो ग्राफ नजर आ रहा है इसकी इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू -4. इसी तरह कोई और वर्टिकल लाइन होती है फॉर एग्जांपल हियर at 2, इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? दिस वुड हैव बीन x इक्वल टू 2. ओके सो वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है x इक्वल टू समथिंग, और हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर होती है y इक्वल टू समथिंग, राइट? दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट. अच्छा, सो Bilal is just writing in the chat box के he cannot see some pictures or he cannot hear clearly. तो जैसे कोई इस तरह के कमेंट भी पोस्ट करता है, कैन द अदर्स इन द क्लास एट दैट पॉइंट कैन यू आल्सो कमेंट एंड लेट मी नो कि इस तरह कोई इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए और बिलाल को भी क्लियर हो जाए कि इफ अदर्स कैन सी इट और नॉट. ठीक है, सो ओके, सो लेट्स राइट दैट इन द चैट बॉक्स. ओके, ऑलराइट. तो मोबाइल ऐप पे जनरली इस तरह के इश्यूज कम होते हैं. अगर आप ब्राउजर से ज्वाइन कर रहे हो, मे बी ट्राई रिफ्रेश करके, it helps sometimes. That might help. Okay, you can try the app then. Okay, all right, let's look at the other types of lines. So then you can have lines like these. या तो आपके पॉजिटिव ग्रेडियंट हो सकता है, like you see in the first case, पॉजिटिव ग्रेडियंट क्या मतलब है? As you go from left to right, लेफ्ट से राइट जाते हुए आपका ग्राफ ऊपर को जा रहा है. और ग्राफ लेफ्ट से राइट ऊपर को जा रहा है, इट्स अ पॉजिटिव ग्रेडियंट. इन द अदर केस ऑन द राइट साइड, ये आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट है, राइट? बिकॉज योर ग्राफ इज गोइंग डाउन. एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, योर ग्राफ इज गोइंग डाउन, सो यू हैव अ नेगेटिव ग्रेडियंट हियर. ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है. इस तरह की लाइंस की जो इक्वेशन की फॉर्म होती है, दैट इज y equal to mx plus c. Okay, it's y equal to mx plus c. अब यहाँ पे जो m होता है, that is the gradient, right? M is the gradient. So we have done that in coordinate geometry before, right? M is your gradient and c is the y-intercept. ठीक है, ये आपके फॉर्म लाइंस ग्राफ्स इस फॉर्म के अंदर होते हैं. M is the gradient पॉजिटिव भी हो सकता है पहले की केस की तरह, और नेगेटिव हो सकता है दूसरे केस की तरह. ठीक है, और c जो है y इंटरसेप्ट है, so this value 4 in this case is your c, और यहाँ पे जो हमारा 5 है that is c. ठीक है, स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन इस तरह से होती हैं y equals mx plus c वाली फॉर्म के अंदर. उनके ग्राफ्स इस तरह होते हैं, स्लैंटेड लाइंस. अच्छा,
Then you have quadratic graphs. Quadratic के अंदर we're going to have two possibilities, right? वो दो possibilities क्या होंगी? These are both called parabolas. एक upward facing होता है, like in the first case. इसको हम U-shaped भी कह सकते हैं. It's a U-shaped curve, the first one. The second one is an N-shaped curve, right? So it's N-shaped. This is the other possibility, right? A quadratic function होता क्या है? Quadratic function की जो general shape होती है, that's like this. General form होती है, that is y equal to ax square plus bx plus c. This is the standard form of a quadratic function. ठीक है? अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा ग्राफ होएगा? ये बेस जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ना, that is a, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इनमें से कौन सी शेप बनेगी, right? So if yes, exactly. So you can say the first one is the smiley face, right? So U-shape कह लें, इसको आप smiley face कह लें, right? And the second one is the sad face. So you can also remember it like that. So yeah, you can do that as well. चल यहाँ पे x square का जो कोएफिशिएंट है a, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास इनमें से कौन सी शेप आएगी, right? So whenever a is positive, या फिर आप a greater than 0 कह लें, या फिर आप कह लें a की वैल्यू पॉजिटिव है, then you get the first shape. If the value of a is negative, then you get the second shape. ये आपके पास अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, आपके पास ये सेकंड वाली शेप है, ठीक है? अब इनमें होता क्या है, जो फर्स्ट शेप है उसके अंदर आपका एक मिनिमम पॉइंट होता है, गॉट अ मिनिमम पॉइंट हियर, ठीक है? तो जब a पॉजिटिव होता है, U शेप्ड होती है और कोई मिनिमम पॉइंट होता है, और जब a नेगेटिव होता है, यानी कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, when that is negative, you have a maximum point. ये ऊपर आपके पास उस कर्व का एक मैक्सिमम, जो टर्निंग पॉइंट होता है, that's a maximum point. ठीक है? This is how your quadratic graph is going to look like. अब आपको वहां पे तो ग्राफ्स के अंदर तो आपको पॉइंट्स पता होते हैं, पॉइंट्स आपके गिवन होते हैं, टेबल गिवन होते हैं, उन्हीं को यूज करके आपको ग्राफ ड्रॉ करना होता है, but it helps to know the shape of the graph, कि आपका ग्राफ एक्चुअली बनेगा किस तरह से जब आप उन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, पॉइंट्स को प्लॉट करके उनको ज्वाइन करोगे, शेप क्या होगी, इट हेल्प्स टू नो दैट शेप. और कभी कभी आप जो रीसेंट पेपर्स में आपने देखा होगा, दे जस्ट गिव यू अ ग्राफ और आपको बताना होता है कि वो कौन सी इक्वेशन के साथ वो कनेक्ट करते हैं, आपने मैच करना होता है, राइट? सो वी विल लुक एट सम एग्जांपल्स ऑन दैट टुमारो, बट दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट दिस. ठीक है? सो आपके पास ये फंक्शन है, ये इक्वेशन है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. a पॉजिटिव हो तो फर्स्ट शेप बनती है, a नेगेटिव हो तो सेकंड शेप बनती है, ठीक है? अच्छा, then we have cubic graphs. अच्छा, cubic graphs की standard form क्या होगी? That's going to be y equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. तो cubic graphs में है क्या basically? Your highest power is 3, right? It's x raised to power 3. Highest power आपकी 3 आ रही है. The cubic graph. Cubic graphs की shapes क्या हो सकती हैं? There are 4 possible shapes for that. ठीक है? अच्छा, एक possible shape क्या हो सकती है? It looks like this. Then another possible shape is, it looks like this. Okay? अच्छा. Then another one is that it looks like this. Okay? And then another one is that it looks like this. ये 4 possible shapes आपके पास होती हैं cubic graphs की, ठीक है? इन्हीं चारों में से कोई आपका, अगर आपके पास cubic curve है, आपको पता होना चाहिए the shape is going to be one of these 4, right? इन चारों में से कोई shape नहीं. अच्छा, अभी जो पहली 2 shapes हैं, जिनमें आपका ग्राफ लेफ्ट से राइट ऊपर को जा रहा है, राइट? लेफ्ट से राइट जाते हुए you're going upwards. इन दोनों के अंदर आपका जो a की वैल्यू होती है, यानी कि जो आपका सबसे हाईएस्ट पावर है, उसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे, दैट्स पॉजिटिव. ये आपका तब आता है जब a पॉजिटिव है. और ये दूसरी वाली दोनों शेप्स कब आती हैं? these come when your a is negative. x क्यूब का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा, आपके पास ये वाली शेप्स आएंगी. अगर x क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, you get this first one of these first 2 shapes. ठीक है? अब इनमें से दो कौन सी होती है? You don't have to know that. आपके पास points given होते हैं, आप उनको बस join करना है. You will get one of these 2 shapes or one of these 2 shapes automatically. तो वो आप, you don't have to worry about that. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनमें से कोई shape हो सकती है. Okay, so that's how cubic graphs look like.
Okay. Haris, this is the previous slide. Sorry, Bilal, this is the previous slide. Okay, so that's the quadratic function, and this is the cubic function, right? This is how the cubic graph looks like. Okay. अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास ग्राफ होता है रेसिप्रोकल फंक्शन से ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए. Reciprocal function. अब reciprocal functions होते क्या है? Essentially, what they mean is that your x is in the denominator. Denominator के अंदर आपके पास x आ रहा हो, right? So for instance, you could have something like this: y equal to 1 over x, right? 1 over x है कोई भी और constant over x, right? It's any other constant. So some constant divided by x, right? We're talking about a positive constant right now. कोई positive value है यहाँ पे ऊपर divided by x आपके पास denominator में आ रहा है, right? अब ये ग्राफ कैसा बनता है? Reciprocal functions के ग्राफ में हमेशा broken होते हैं. So ये आपने याद रखना है, they're always broken. अगर आप पूरी range पूरा ग्राफ अगर आप complete show करो ना, they are always broken graphs. वो उसकी वजह ये होती है जब x की वैल्यू 0 हो जाए, डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाए, तो फंक्शन इज अनडिफाइंड, बिकॉज़ किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हो. तो उसमें क्या होता है कि आपका ग्राफ ब्रेक हो जाता है उस पॉइंट के ऊपर, राइट? नाउ how will this shape of this graph look like? It's going to be like this. Because ये y axis है, ये x axis है. The shape of this graph is going to be like this. So shape of this graph is going to be this and this. इस तरह से ये broken होगा. जब x की वैल्यू 0 है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं आ रही होगी. एक पार्ट इसका राइट साइड पे हो गया, एक पार्ट लेफ्ट साइड पे हो. ठीक है, इसी को अगर मैं नेगेटिव कर दूं, if I have y equals minus something, minus some value divided by x, what happens in that case? ये बस आपका उल्टा हो जाता है. So I will draw that again. So you have the y-axis here, you've got the x-axis here. And it's minus something, minus, let's say minus 3 over x, you know, something like this. All that happens is आपके reflect हो जाता है ग्राफ. तो ऊपर वाला पार्ट ये लेफ्ट साइड पे चला जाता है और नीचे वाला पार्ट राइट साइड पे चला जाता है. Right? But again, आपको points दिए होंगे, आपने उन points को join करना है. But what you do need to remember is कि ये broken graph होगा. ठीक है? तो आप अगर वो, for example, आपको एक point इधर आ रहा है, एक point ऊपर आ रहा है, आपने उनको join नहीं कर देना जबरदस्ती. Right? एक point ऊपर है, एक point नीचे है. You don't join these 2 points like this. इनको नहीं join करना. So this is what you need to know. A graph broken हो सकता है. You don't need to join every single point. Okay? All right. Saad, you can say that. So in this case, you can say y and x, they are inversely proportional, right? So you can say that. But that's not what the point here is. So एक आपके पास ये graph हो गया, reciprocal functions पे. Sometimes what happens is you have a power there. So if I would erase those graphs first. Sometimes x की बजाय आपके पास ये क्या होगा? Let's say x square है नीचे. यहाँ पे भी minus something over x square. What happens in this case? अब क्योंकि x square तो हमेशा positive होता है, तो मतलब आपका ग्राफ यहाँ पे x axis के नीचे नहीं जाएगा. So right वाला part तो इसी तरह आएगा, left वाला part जो negative side पे जा रहा था पहले, it's not going to be there now. ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा. ठीक है? But again, आपको values दी होंगी, आप उनको plot करोगे, it will, you know, come out to be something like this. Again, just remember, यहाँ पे अगर एक point आ रहा है, यहाँ पे एक point आ रहा है, उनको आपने इसमें join नहीं करना. ये कभी भी y axis को intersect नहीं कर सकता, because x की value 0 के ऊपर this function would be undefined. इनको आपने आपस में join नहीं करना इस तरह से. ठीक है? इन दोनों parts को join नहीं करना. That's what is important to remember. अच्छा, दूसरा ग्राफ यहाँ पे minus something over x square, इसमें क्या होगा? ये बस क्योंकि नेगेटिव हो गया है, पूरा ग्राफ नीचे को चला जाएगा, इस तरह आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह आ जाएगा. Right? So this is how these reciprocal functions of graphs look like. Okay. Achha. Then we have the last one, and that's called exponential functions. Exponential functions.
Okay. Saad, which one? Which graph are you talking about? Left side pe, okay. This graph here, this part. Okay, so you're talking about this part, right? So x की value तो negative हो सकती है, x की value तो negative हो सकती है. Yeah, so y cannot be negative, right? Y cannot be negative, right? For example, if you have this function, y equals 2 over x square, okay? अब x की वैल्यू तो आप कोई भी इनपुट कर सकते हैं ना उसके अंदर. x की वैल्यू लेट्स से मैंने इनपुट की इसके अंदर -3, ओके? अब -3 इधर कहीं पे होएगा, ओके? अब x की वैल्यू इसके अंदर इनपुट करेंगे, we get 2 over -3 का होल स्क्वायर. तो y की जो वैल्यू आएगी दैट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव. y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज वहां पे x स्क्वायर आ रहा है. x की वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है बट y की वैल्यू जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो पॉजिटिव आएगी, ओके? गुड. अच्छा, सब लास्ट जो टाइप ऑफ फंक्शन आपको बताना, फंक्शंस का आपको बताना चाहिए, दैट्स कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या मतलब होता है? x is basically in the power, right? You would have seen graphs like these or equations like these, functions like these. Y equals, let's say, 3 into 2 raised to power x, right? So something like this, for instance. इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ जो है, what's important to know here is या तो आपके पास फंक्शन है, यहाँ पे y कह दो, मैं x कह दो. इसके एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है. अच्छा, पहले तो ग्राफ की शेप ऑफ ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ग्राफ की शेप जो होती है दैट्स लाइक दिस. इस तरह का ग्राफ होता है. इट नेवर टच द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता, राइट? एक्स एक्सिस के बिल्कुल पास पहुंच जाता है लेफ्ट साइड के ऊपर, but it never touches the x-axis. Shape of the graph looks something like this. Let me actually make it a bit shorter, clear हो जाए. Shape smaller and flat. So this is how it basically looks like, right? Exponential graph इसलिए कहते हैं. अब देखें, it increases at a very fast rate. बहुत तेजी से करिए ऊपर हो जाता है इस तरह, like this. Right? This is how the exponential graph looks like. अच्छा, अब यहाँ पे जो important point है वो ये है जहां पे ये y axis को कट करता है. y axis को कहां पे कट करता है? y axis किधर कट करेगा? जो आपके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी, जो बाहर लिखा होगा नंबर, वहां पे y axis कट करेगा. हाउ डू वी नो दैट? अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 इनपुट कर दें, x की वैल्यू को 0 इनपुट कर दें, व्हाट डू यू गेट? यू गेट y equal to 3 into 2 raised to power 0. Anything raised to power 0 is just 1. So you get 3 into 1 and that is 3. Right? तो जब यहाँ पे किस पॉइंट पे कट करेगा ये वाला ग्राफ? ये 3 के ऊपर कट करेगा. ठीक है? अगर इसको जनरलाइज कर लें, if you had this form y equals k into something raised to power x, right? तो ये जो y axis पे इसमें कट करता है, that point is k. k के ऊपर ये y axis को कट करता है. Okay? So ये जो आपको कांस्टेंट बाहर होगा वो आपका y इंटरसेक्ट होता है इसके अंदर, इस तरह के ग्राफ के अंदर. बिकॉज़ जब x की वैल्यू 0 इनपुट करते हैं आपके पास सिर्फ वही बच जाता है तो बाहर नंबर लिखा होता है. ओके, सो दिस इज हाउ एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स लुक लाइक. अब इसमें भी एक वेरिएशन ये हो सकती है that instead of having a positive number outside you have a negative number, right? So if I were to just switch this और बाहर positive के बजाय I could have a negative number. So let's say -3 into 2 raised to power x. Again, it's an exponential graph, right? Again, it's an exponential graph. तो यहाँ पे क्या आएगा? It's just going to be the other way around. ये नीचे को चला जाएगा. जो पहले ग्राफ था उसी को आपने इन्वर्ट कर दिया. इस शेप जो बनेगी, it's going to be like this. Try again. It's
going to be like this on the other side. ठीक है, ऊपर जो ग्राफ था पहले ये बनाया था, जब नेगेटिव कर दिया उसको वो फ्लिप होकर नीचे आ जाएगा. It's going to be like this. Again, ये जो y-intercept होगा ये वाला point, what is that going to be? That point is going to be that constant that we have outside. That's -3. Again, हम x की value 0 input करें, हमारे पास -3 आता है. Exponential graphs look like this. ठीक है? These are all the different types of graphs that you need to know of. ठीक है? Graphs की shapes इन्हीं में से कोई आती है. ये आपको shapes का idea होना चाहिए, कौन सी shape किसको correspond करती है. Okay, so that's the first thing about graphs, that you need to be aware of these different shapes that you have for these different types of graphs. Acha. Now, x बिलाल हमने 0 क्यों इनपुट किया था, x हमने 0 इनपुट किया था to find the y-intercept. हम ये देख रहे थे कि y-intercept जो है वो क्या वैल्यू आ रही है, राइट. हमने x 0 इनपुट किया वहां पे, तो हम देखते हैं corresponding value of y क्या आती है. That turns out to be -3. We were just trying one particular point और उस पर देख रहे थे कि वहां पे क्या आता है. ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल, और उस एग्जांपल को यूज करके we will try to do different types of parts that we get, question parts that we get in graphs question. में क्या-क्या different types of question को पूछता है generally. So I'm just going to copy one example here, and we will start with that. Okay, it'll take a few seconds, so please wait for a while. It's taking some time, unfortunately. Just give me a few more seconds. Let's see if it works. I'm not sure why this is happening. Okay, yes, Adam, we are going to do a few questions now that will just clarify a few concepts. It's taking a bit time to upload, unfortunately. Okay, so we're going to start with a very simple example first. Okay, it's a very simple example. इसमें बिल्कुल basic चीजें टेस्ट हो रही हैं, लेकिन इसमें हमारा क्या होगा, ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है और ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है. We at least want to get done with these things first. ठीक है, ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है और टेंजेंट बनाना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. Let's get done with these things, क्योंकि ये हर क्वेश्चन के अंदर ये दो चीजें तो बस ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर आ रही होती हैं. ग्राफ आपको ड्रॉ करना होता है और फिर आपको जो है टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट फाइंड करना होता है at any particular point. Okay. Okay, it's not visible. Is this readable? Is this readable to everyone?
No? अच्छा, यहाँ पे ना मसला ये है कि जूम करना इसको मुश्किल हो जाता है, तो what I'll do is अच्छा, let me try something else then. अलग अलग पेजेस पे ले जाता हूँ फिर. Okay, let me draw it again. Okay, I think this is readable. So what we'll do is we will take it aside. और जो ग्राफ है मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं अलग से पोस्ट कर लेता हूँ. Let's see if this helps. Saad, actually the problem is that this platform is not very intuitive, as in it works, so it's much easier to do on Zoom, but यहाँ पे ना they don't have many options of resizing it. You can't resize it by a lot. Yeah, so resize नहीं कर सकते इसका ना, so I can't really make something smaller or bigger here. अच्छा, so yeah, I'll just do it on different pages then. So that is what is probably going to work then. Okay, good. All right. So let's look at this. सबसे पहले आपके पास एक equation है. So you've got y equals x plus 3 over x minus 3. You've got this equation. सबसे पहले आपको काम में क्या करने का रहेगा? Almost in all cases, it will ask you to complete a table, right? So you have one value missing here. X equals 6 के ऊपर, you have to find the corresponding y value. अभी calculator को भी directly input कर दोगे. 6 plus 3 over 6 minus 3. What does that give you? 6 plus 0.5 minus 3, and that is 3.5. Okay. Walaikum assalam, Laiba. Welcome to the class. Okay. So this is what we have. Okay, so this is 3.5. Now we have completed the table. उसके बाद second part में हमेशा आपसे क्या कहेगा? You have to draw some graph. आपको graph draw करना है इसके बाद. अच्छा, अब graph में क्या है? You will either be given the scale, या फिर उसने आपको ग्राफ के ऊपर ही ऑलरेडी पॉइंट्स मार्क करके दिए होंगे. ठीक है, यहाँ पर उसने आपको स्केल दिया हुआ है. वो क्या कह रहा है? You have to use a scale of 2 centimeter to 1 unit on both axes. Now, in the Cambridge exam, you will have a grid like this, जिसके अंदर 5 boxes on each axis are going to represent 1 centimeter. This is 1 centimeter. तो आपके पास जो बड़ा एक बॉक्स बनेगा ना, यहाँ पे आपको इतना विजिबल नहीं है. This big box, this one big box is 2 centimeter by 2 centimeter, right? तो 10 boxes होंगे ना, 10 small boxes, वो आपके 2 centimeter को represent कर रहे होंगे. ठीक है, आपने उसका ध्यान रखना है. यहाँ पे 5 boxes जो हैं वो 1 centimeter होता है. 10 boxes represent 2 centimeters. हम small boxes की बात करें. ठीक है, आप उसका ध्यान रखना. वो कहते हैं 0 से 7 तक आपको x axis पे स्केल चाहिए. 2 centimeter represent 1 unit. हम 0 से start करेंगे. यहाँ पे write 0 here. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Achha, on the vertical axis, it says from 0 to 4, and again 2 centimeters to represent 1 unit. So you've got 1 here and 2 here, 3 and 4. Okay, आपको सिर्फ क्या करना है? उन points को plot कर देना है. ठीक है. Now what I'm going to do for that is I will just
have to go back and forth to see the table. So again, I think that will be helpful if I just have that table visible to me there. Copy it again. I'm really sorry for the delays. Like it's much easier to do on other note cards, but यहाँ पे platform पे upload करना पड़ता है वो बार-बार, so it takes a bit more time. Okay. अच्छा, so this is the table that we have. ठीक है, ये हमारे पास table था. ये values हमें क्या करनी है, यहाँ पे plot करनी. So let's do that. 0.5 to 3.5, so 0.5 and 3.5, that's going to be here. This is 0.5 and 3.5, that point is right here. Okay, then we have 1 and 1, so 1 and 1, 1 is here. Then 1.5 and 0.5, 1.5 and 0.5, 1.5 ये है, 0.5 is right here. So then we have 2 and 0.5, that's going to be here. 3 and 1, that's right here. 4 and 1.75, 4 and 1.75, that's this point here. 5 and 2.6. And then finally, we have 6 and 3.5. 6 and 3.5, that is going to be right here. ठीक है, ये हमने points plot कर दिए. Once we are done with the plot, we just join all of those points. ठीक है, अभी आपको नजर आ रहा है, although it looks like a reciprocal function, it is in fact a reciprocal function. लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने आपको सिर्फ इतना part दिया हुआ है, 0.5 से 6 तक आपको सिर्फ plot करना है. 0 के ऊपर वो ग्राफ ब्रेक होता, आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि वो ग्राफ ब्रोकन है. आपको एक साइड नजर आ रही है सिर्फ उस ग्राफ की. दूसरी साइड पे अगर आप वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला भी ड्रॉ करते ना, वो अलग से ड्रॉ होता. तो दिस वुड हैव बीन अ ब्रोकन ग्राफ, लेकिन उसका आप सिर्फ एक पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, जब आपने ड्रॉ करना है ये ग्राफ, मेक श्योर यू आर यूजिंग अ लेड पेंसिल फॉर दिस. मेक श्योर यूजिंग अ लेड पेंसिल और आपने स्मूथ कर्व बनानी है थ्रू दिस. इट कैन टेक अ फ्यू आइटरेशंस. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो है वो ड्रॉ करेंगे, फिर थोड़ा सा इरेज करेंगे, फिर दोबारा ड्रॉ करेंगे. दैट्स हाउ इट जनरली वर्क्स एंड दैट्स ओके. इसलिए पेंसिल यूज करना जरूरी है. Okay, so let's draw this. I'm going to try this. Digitally, it's a bit difficult. So you take your tanks. It's better. Just make sure there are no corners on your graph. थोड़ा सा smooth करने की कोशिश करनी है. Corners नहीं बनाने. हल्का सा बना के you can try erasing that. अगर smooth नहीं लग रहा है वो, and try redrawing it, and that's perfectly okay. आप time spend कर लें इसके ऊपर, लेकिन smooth बनाएं, क्योंकि इसके ऊपर आपके बाकी parts depend करते हैं. If you get this wrong, you can end up, getting the other parts wrong. All the error curve forward आपको मिल जाता है थोड़ा सा. Just try के you make it accurate enough. आपके अगले parts के results जो हैं वो accurate आ रहे हो इसके बाद. Okay. Okay, now this is fairly acceptable. So this is what the curve looks like. It's a smooth curve or a fairly smooth curve. And now we move on to the next part. ठीक है, आपने ये graph draw कर लिया. अब उसके बाद वो क्या कहता है in the next part? Next part में वो कहता है, I'm just going to write that. That's going to be quicker. Find the gradient of the curve at 1, 1. Okay, I'm going to write that here. Find the gradient of the curve at 1, 1. So write that here. Find the gradient of the curve at 1 and 1. 1, 1 के ऊपर आपका gradient क्या है? ठीक है, आप पहले आप क्या करोगे, जाके वो point देखोगे. Point कहाँ पर होएगा?
1 point, that's right here, that's this point. इस पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, राइट? टेंजेंट अब क्या होता है? टेंजेंट इज, अच्छा टेंजेंट क्यों ड्रॉ करना है? ग्रेडियंट किसी भी कर्व का आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, राइट? ग्रेडियंट किसी भी कर्व का आप डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, राइट? कर्व का ग्रेडियंट के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। कर्व का ग्रेडियंट आप एक ही पॉइंट ना, सिर्फ 1 and 1, तो लॉट पीपल डू दिस मिस्टेक। कभी कभी ना उसने आपको टेंजेंट का बताया नहीं होता, आप उसको डायरेक्टली कहते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट। आपने ये नहीं करना कि कर्व के कोई भी दो पॉइंट्स ले, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 and 1 and this point is let's say 0.5 or 1.5 and 0.5. You don't just find the gradient of these 2 points. That's not how it's going to work. कर्व के ऊपर जब भी आपको ग्रेडियंट फाइंड करना होता है, you have to make a tangent, right? That's necessary. अब tangent क्या है? You have to draw a line on this graph such that it only touches this curve at this point. इस point के ऊपर आपने एक ऐसी लाइन बनानी है that only touches the curve, right? And has the same direction as the curve. कर्व की डायरेक्शन आप देखिए यहाँ पे जो लग रही है, उसी डायरेक्शन के अंदर तकरीबन आपने इस तरह की लाइन बनानी है, ठीक है? वन आइडिया कैन बी, आप दोनों साइड्स पे ना तकरीबन एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर दो पॉइंट्स कंसिडर कर लें। जो इस लाइन की डायरेक्शन होगी ना, वही आपके टेंजेंट की डायरेक्शन होगी। उसको थोड़ा सा लाइन को नीचे लेकर आते जाएं, तो ये आपका टेंजेंट इस तरह का बनेगा, राइट? दैट्स वन आइडिया। दोनों साइड्स पे कर्व के दो पॉइंट्स लें, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट शुड बी रफली दैट, जो आपको उस लाइन की डायरेक्शन मिल रही होगी, ठीक है? इफ आई विल ड्रॉ दिस हियर, इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये मेरा टेंजेंट इस तरह का बन गया। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इधर से डायरेक्शन इसकी थोड़ी सी, so I can't change the direction unfortunately. Take it to the side. जी बिल्कुल अंदर बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। It should not intersect. It cannot intersect the curve. It cannot intersect the curve. यानी कि दो पॉइंट्स पे टच नहीं करना चाहिए ग्राफ को, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, and then we'll go away like this. Something like this, ठीक है? अगर टेंजेंट की थोड़ा सा इसकी लेंथ जो है ना थोड़ी बड़ी कर देनी है, इट शुड नॉट बी स्मॉल, इसका लेंथ जो है थोड़ी सी बड़ी कर देनी है, लाइक जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो उसको उतना एक्सटेंड कर दो, so something like this. And then after you've drawn a tangent, आप ये भी कर सकते हो कि आपने एक दफा वेरीफाई करने के लिए, मतलब this is one way to verify the accuracy of your tangent as well, कि दोनों साइड्स पे ना कर्व के देखें क्या डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट एंड द कर्व इज दैट फेयरली सिमिलर। ये जो गैप है, ये गैप और ये दूसरी साइड पे जो गैप आ रहा है, इज दैट फेयरली सिमिलर? इफ दैट्स द केस देन दैट्स फाइन, ठीक है? दैट इज द केस देन दैट्स फाइन। कभी-कभी क्या होता है, लोग इस तरह के टेंजेंट बना देते हैं दैट यू नो looks like this for instance, or in fact something like this, let's say. अब ये भी आपको लग रहा होगा ये भी सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है, लेकिन इसमें मसला क्या है, एक साइड पे देखें, नीचे वाली साइड पे कर्व और लाइन का बिल्कुल भी गैप नहीं है। यहाँ पे देखें कर्व और लाइन का बिल्कुल भी गैप नहीं है, कर्व और टेंजेंट का ऊपर वाली साइड पे काफी ज्यादा गैप है। तो दिस इज वन वे टू जज एज वेल, दोनों साइड्स पे रफली सिमिलर गैप होना चाहिए आपके टेंजेंट और कर्व के दरमियान, ठीक है? तो इस तरह से टेंजेंट बनाना। Once you're done with that, what you have to do is you take any 2 points on the tangent. अब ये पॉइंट्स कैसे चूज करने हैं? You have to try and take points far away from each other. एक दूसरे से दूर पॉइंट्स आपने सेलेक्ट करने हैं। इसकी रीजन ये होती है कि आपका रिजल्ट्स ज्यादा एक्यूरेट आते हैं इस तरह से, ठीक है? जितना दूर है उतना बेहतर है, और कोई भी आप जो पॉइंट जो आप आसानी से रीड कर सको। सो फॉर इंस्टेंस आई कैन टेक दिस पॉइंट हियर, मैंने ब्लैक में मार्क किया, ठीक है? इसलिए मैं पॉइंट उस पॉइंट के नीचे कोई और पॉइंट ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस वन हियर, राइट हियर। ये मैंने दो पॉइंट्स चूज कर लिए अपने टेंजेंट के ऊपर। टेंजेंट के ऊपर दो पॉइंट चूज करने हैं, एक आपके उस पॉइंट के ऊपर, एक उससे नीचे, ठीक है? मैंने दो पॉइंट चूज कर लिए।
अभी ऊपर वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? Let's figure those out. So this is 0.2 here on the x-axis. On the y-axis, this is 2.5. Let me write that here: 0.2 and 2.5. That's 1 point. नीचे वाला point क्या आएगा? That is 1.3 and 0.4. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने ले लिए. अब आपने इन पॉइंट्स को यूज करके आपने ग्रेडियंट फाइंड कर लेना है. ग्रेडियंट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, आपके पास उससे ग्रेडियंट आ जाएगा. राइट, सो लेट्स अप्लाई द ग्रेडियंट फॉर्मूला ऑन दिस. द ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 minus y1 divided by x2 minus x1. राइट, अब y2 क्या होएगा? किसी को भी आप x1 y1 कर लें, किसी को भी आप x2 y2 कर लें. Let's say I take this as x1, this is y1, and this is x2, and this is y2. So it's going to be 0.4 minus 2.5 divided by 1.3 minus 0.2. And I can find the gradient from this. Okay, अब देखें क्या आता है. Minus 2.1 over 1.1. So what do we get from that? 2.1 over 1.1. Anyone? What do we get? 1.9 के करीब होएगा. Anyone tell me the exact value? Find my calculator. So minus 2.1 divided by 1.1. This is minus 1.9. Yeah, so 1.9. That's your gradient for this. Minus 1.9. ठीक है, gradient के लिए क्या करना है? Engine draw करना है. Engine draw करना है और फिर आपने tangent के ऊपर 2 points लेने हैं. ठीक है, 2 points लेंगे, उनका gradient figure out कर लेंगे. Okay, so that's how you do it. अच्छा, अब ये पार्ट्स तो आपके पास तकरीबन हर क्वेश्चन में आ रहे होंगे. ठीक है, आपसे वो कहेगा कि कोई आपने ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ को यूज करके आपने उस ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर आपसे पूछेगा कि आपने इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है किसी पॉइंट के ऊपर कर्व का. ठीक है, उसका तरीका हमेशा क्या होगा? आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करके आप उस टेंजेंट के ऊपर 2 पॉइंट्स दोगे और आप उसको यूज करके ग्रेडियंट फिगर आउट करोगे. ठीक है, अच्छा. नाउ दिस इज वेयर द ट्रिकी पार्ट स्टार्ट्स. ठीक है, जो मुश्किल वाला पार्ट होता है ग्राफ्स के अंदर, व्हिच a lot of people find difficult. This is where that starts now. कि अच्छा, उस ग्राफ को यूज करके फिर आपको कुछ चीजें करनी होती है. And you have to solve some equations using the graph. ठीक है. Now let's take one simple example first. So let's say वो आपके पास यहाँ पे कह रहे हैं find the solution, use a graph to solve this equation. X plus 3 over x equal to 5. ये equation solve करना है कह रहा है. X plus 3 over x equal to 5. अब यहाँ पे you have to clarify this concept first. आपके पास हमेशा क्या होएगा? You will have some curve that you have drawn there. उसकी कोई equation होगी that will be given to you. ठीक है, कोई आपके पास इस केस के अंदर let's figure out that equation. हमारे पास क्या थी? y equals x plus 3 over x minus 3. That was the equation. ये equation आपको हमेशा given होएगी जो अपने ग्राफ ड्रॉ किया है. So that's y equals x plus 3 over x minus 3. This was our equation. Let me just confirm again. X plus 3 over x minus 3. Yeah. ये आपके पास कर्व जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, ये आपको ये एक इक्वेशन हमेशा गिवन होगी. ये ग्राफ आपके पास हमेशा गिवन होगा. ठीक है. अच्छा, अब आपने एक चीज याद रखनी है कि ग्राफिकली आपके पास कोई भी 2 ग्राफ्स हो और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, उनका मतलब क्या होता है? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से मैं आपको यहाँ पे ना एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. सो लेट्स से दिस लाइन दैट लुक्स लाइक दिस वर्टिकल लाइन हियर. ठीक है. नाउ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इफ आई हैव टू लुक एट दैट, दिस इज x equal to 3 line. राइट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. x equal to 3 line. In fact, let's take another example, slightly different. Slanted अगर मैं कर लूँ यहाँ पे, yeah, let's draw that line. Slanted line बनाता हूँ. That might be easier to understand.
वहाँ पे 0 1 है, इधर भी वही है, so draw this line here. Okay, so you've got this line. ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे बनाई है, इस लाइन की इक्वेशन इज y equal to minus x. This is the equation of this line. ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है. ओके, तो हमारे पास कर्व है, उसकी इक्वेशन क्या है? दैट इज y equal to x plus 3 over x minus x. अब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज दिस पॉइंट हियर. जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैट पॉइंट? एट दैट पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर, these two graphs have the same value. इस ग्राफ की और इस ग्राफ की दोनों की सेम वैल्यू है. उसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं. दोनों ग्राफ्स एक दूसरे के इक्वल हैं वेयर दे इंटरसेक्ट. तो ग्राफिकली जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं आपके ग्राफ्स के, उनका एल्जेब्रिकली या थ्योरेटिकली उनका मतलब ये होता है कि जब वो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए, वो दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इक्वल हो जाए. तो अगर आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिगर आउट करना होता, व्हाट वुड यू से? You say y is equal to minus x, that's one graph. You've got y equals x plus 3 over x minus x, that's the other graph. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा आपको? इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. दैट मींस minus x equals x plus 3 over x minus x. इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. That is the key concept that you always need to remember in all the other parts that we're going to discuss. कि point of intersection क्या represent कर रहा होता है? जब ये दोनों कर्व्स की इक्वेशन में देखें क्या आ रहा है, दोनों के अंदर y और x आ रहे हैं, y और x आ रहे हैं. इनको आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिगर आउट करना, उसका x कोऑर्डिनेट बेसिकली, उसका x कोऑर्डिनेट अगर आपने फिगर आउट करना हो तो कैसे आता है? आप y दोनों में से सब्जेक्ट बनाते हो, वो ऑलरेडी आपके पास बना होगा, आपने उन दोनों को इक्वेट कर देना. That will give you this point of intersection, right? That's the key concept that is going to be used here. Now let's go to that part now. Saad, just give me 1 minute. Let me do that part and I'll take a question then. अब यहां पे देखें, हमारे पास ये कर्व गिवन थी, ये कर्व गिवन थी. वो क्या कह रहा है? यूज योर ग्राफ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. अब ग्राफ तो हमारा सिर्फ यूज हो सकता है टू सॉल्व some equation that involves this graph, y equals x plus 3 over x minus 3. ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसको यूज करना है आपने किसी तरह से. यानी कि हमारे पास एक साइड पे ये होना चाहिए x plus 3 over x minus 3, दूसरी साइड पे कुछ और आ सकता है, राइट? ये मैंने आपको पीछे बताया. जब दोनों को इक्वेट करेंगे उसका क्या मतलब है? यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमने फिगर आउट करना है, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है एक साइड पे एक ग्राफ की इक्वेशन होगी, उसकी एक्सप्रेशन होगी, दूसरी साइड पे दूसरे ग्राफ की एक्सप्रेशन होगी. अब ये दूसरी साइड पे क्या आ रहा होगा ये हमें फिगर आउट करना है. इसका क्या तरीका होएगा? बस जो इक्वेशन लिखी है आपने यहाँ पे लिखी, x plus 3 over x equals 5. Whatever is given, you just write that down like this. आपने ग्राफ कौन सा ड्रॉ किया था? आपने ग्राफ ड्रॉ किया है इसका, that is x plus 3 over x minus 3. ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है? आपने देखना ये है, let me actually write it down further down here, 3 over x minus 3. आप इस इक्वेशन के अंदर एक साइड के ऊपर ये चीज कैसे लेकर आ सकते हो, जो नीचे वाली चीज है? हाउ कैन यू चेंज दिस ग्राफ? इस ग्राफ को आप कैसे चेंज कर सकते, इस इक्वेशन को आप कैसे चेंज कर सकते हो कि एक साइड के ऊपर आपके पास ये आ जाए x plus 3 over x minus 3. एक साइड के ऊपर आपके पास ये आ जाए. हम क्या करेंगे? अगर हम इसमें से -3 कर दें, -3 कर दें, तो दोनों साइड से -3 कर देते हैं. यहाँ पे दोनों साइड पे क्या करते हैं? -3 कर देते हैं. x plus 3 over x minus 3 that's equal to 5 minus 3. अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड्स में से 3 माइनस कर दें तो क्या होगा? हमारे पास ये फॉर्म आ गई, that is what we drew earlier. हमने ये ग्राफ पहले ड्रॉ किया था.
एक साइड पे आपके पास ये आ गया, ठीक है, एक साइड पे ये आ गया आपके पास, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी हैव x plus 3 over x minus 3 that's equal to 2। तो जो आपको लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर, दैट इज गोइंग टू बी दिस वन। एक साइड पे तो वही है x plus 3 over x minus 3, दूसरी साइड पे हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर 2 आ रहा है और एक के अंदर y आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास दूसरी साइड पर यहां पे होना चाहिए दैट इज 2, राइट। तो हमने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर देखना है वेयर इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 आपके ग्राफ के अंदर किधर आ रहा है, ठीक है। लेट मी रिपीट, व्हाटएवर इज द इक्वेशन दैट इज गिवन, ये आपके पास इक्वेशन थी, इसमें सिर्फ x आ रहा है, आपने इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है कि एक साइड के ऊपर आपके पास वो कर्व आ जाए, जो ओरिजिनल कर्व थी। कर्व की एक्सप्रेशन क्या था, x plus 3 over x minus 3। हमने क्या किया, दोनों साइड से 3 माइनस कर दिया, दोनों साइड से जब 3 माइनस कर दिया तो क्या हुआ, वी गॉट 2 ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड में हमारे पास पूरी कर्व आ गई। हम y equals 2 जाके ड्रॉ करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर, y equals 2 जाके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली लाइबा, दैट्स करेक्ट, y equals 2 यहाँ पे जाके ड्रॉ करेंगे और देख लेंगे कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है लाइन हमारे ग्राफ को। जस्ट ड्रॉ दिस लाइन हियर, ठीक है। कहा ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिकली करना पड़ेगा, हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की y equals 2 और हम देखेंगे इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहे हैं, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हियर, ये एक पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू क्या आती है, यू कैन जस्ट रीड दैट हियर, दिस इज 0.7, यहाँ पे x की वैल्यू 0.7 आ रही है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट्स राइट हियर, इसमें क्या वैल्यू आ रही है, दैट्स 4.3। So the solutions to that equation that we wrote there, they are x equal to 0.7 or 4.3, right? So this is one type that can come. आपके पास उसने कहा हुआ है कि ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, the curve is what you already have, curve की इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, आपने उसकी एक साइड को वो बना देना है, एक साइड को आपने इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देना है, जो दूसरी साइड पर आएगा वो आपने जाके प्लॉट कर ड्रॉ कर देना है, अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेना है, ठीक है। सो दैट्स वन पॉसिबिलिटी। नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू अदर पॉसिबिलिटीज दैट यू मे हैव टू डील विद। अच्छा, बट बिफोर वी लुक एट देम, यस साद, you have a question? Saad, you want to say something? No, Saad, I'm from Lahore. I'm not from Karachi. I'm in Lahore now. I've never been to Karachi, in fact. So I've been to a lot of places around the world, but I've not been to Karachi yet. I do want to go there, but I'm from Lahore. Acha. Let's look at a few other questions. Okay. अब मैं क्या करूँगा? I will only be showing you the last parts of these questions, and I'll be telling you अच्छा इस part में मैं क्या करना चाहिए। Graphs हम नहीं draw कर रहे होंगे, हम सिर्फ इनके last few parts देखेंगे for some of these graphs वाले questions, ठीक है? And I'll tell you what we are supposed to be doing there. So let's take this example. It's okay, Nimra. You have the recordings available as well, so you can have a look at that later on if you missed the earlier part. Or of course, this is the important part. This is where most people find graphs of functions or a topic difficult. So let's have a look at some of these questions. Okay. Acha. Now these are the last few parts of a particular question in which उसने आपसे पहले से क्या करवा लिया हुआ है? No, Nimra, these are not from D2. These are all past paper questions. ये सारे आपके past papers से ही आ रहे हैं. अच्छा, अब ये आपके पास एक उसने ना इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या किया, आपने ये ग्राफ ड्रॉ करवाया, पहले ग्राफ ड्रॉ करवा लिया,
That's y equal to x over 20 into x square minus 10. You were asked to make this graph first. ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद उसने आपसे कुछ चीजें पूछी, वो ग्राफ ड्रॉ करवा लिया, अब उसने टेंजेंट बना के किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट पूछा, राइट? वो भी आपने कर लिया, सो दैट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उसके बाद वो कहता है the graph of this function, that is y equals x over 20 into x square minus 20, together with the graph of a straight line, so there's some other line, जिसके इन दोनों को यूज करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? नाउ we've got one equation जो हमारे पास ओरिजिनल कर्व थी, so that's y equal to x over 20 into x square minus 10. That is one equation that we have. ये हमने कर्व ड्रॉ की, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है, इस कर्व को और किसी एक स्ट्रेट लाइन को, we don't know what that straight line is, उनको यूज करके अब क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपसे पूछता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन L. इस लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है, ओके? So let's think about this. How are we going to do this? Yes, Nimra, you want to say something? I've just unmuted you. Nimra, you want to say something? Okay. अच्छा. So इस तरह हम क्या करेंगे? No, I'm sorry, Nimra, I could not hear you. You can just write it down. Star is going to be around 20 more minutes, almost 20 more minutes. Okay. अच्छा, now we have this curve और हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन है जिनको यूज करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अब इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है इट्स अ स्ट्रेट लाइन, यू आर गिवन दैट इट्स अ स्ट्रेट लाइन, आप इसको अज्यूम कर लो, दैट दिस इज y equal to mx plus c. ओके, y equal to mx plus c. आप इसको ये अज्यूम कर लो कि ये इक्वेशन थी, उसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन इज y equals mx plus c. ओके, तो इस कर्व को और इस लाइन को अगर हम इक्वेट कर देंगे, we should be getting this thing, right? Because मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब हम इन दो इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करते हो, दैट्स व्हाट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स. तो आप क्या करोगे, अपने, क्योंकि उसने कहा था एक स्ट्रेट लाइन है और ये उसने आपको एक कर्व दी हुई है, ये जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे. आपने सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है. You have x over 20 into x square minus 10, that's equal to mx plus c. अब now remember, उसने कहा है कि ये इक्वेशन है x cube plus 10x minus 80 equals 0. आपके पास ये आ रहा है, आपने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और आपके पास यहां से m और c की वैल्यूज आ जाएंगी. हाउ? लेट्स थिंक अबाउट दिस. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. ये आपके पास 20 था नीचे, 20 को जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, यू आर लेफ्ट विद x cube, right? X into x square, that gives you x cube, minus 10 times x. 20 जब जाके multiply हुआ, what do we get? We get 20 mx plus 20 times c. Okay? We take everything to the left side. We take everything to the left side because यहाँ पे क्या था? We had x cube plus 10x minus 80 equal to 0. Right side पे 0 है. We want 0 on the right side here as well, क्योंकि हम उससे compare कर सकें कि उसके पास ये थी, हमारे पास ये आ रही है. They are both the same. दोनों एक दूसरे की आइडेंटिकल होनी चाहिए. x cube minus 10x minus 20 times mx minus 20 times c, that is equal to 0. Okay, this is what we get. अब यहाँ पे हम x को कॉमन ले लें अगर, we get x cube plus minus 10 minus 20m into x minus 20 times c, that is equal to 0. Now notice, उसने हमें क्या दिया हुआ था, उसने हमें बताया हुआ था कि the equation is x cube plus 10x minus 80 equals 0. हमारे पास क्या आ रहा है, we are getting x cube plus
-10 -20m। अच्छा, मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन इसलिए नहीं लिया, तो ऊपर यहाँ पे उनके पास प्लस था ना, कंपैरिजन में आसानी होगी अगर हम नीचे भी प्लस रख लें। अगर आप माइनस को भी कॉमन लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कंपेयर करते हुए आपको उस माइनस को कंसिडर करना पड़ेगा। जस्ट कीप दैट इन माइंड। हमारे पास x आ गया -20c, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू डू इज, क्योंकि हमारे पास इक्वेट करके ये आ रही है इक्वेशन, उसने जो इक्वेशन दी थी ये थी, इनको आपस में कंपेयर कर लेंगे बिकॉज दे बोथ हैव टू बी आइडेंटिकल। जो आपके पास x का कोएफिशिएंट ऊपर था वही आपके पास x का कोएफिशिएंट नीचे आना चाहिए। दिस वाज +10, we have -10 -20m. Both of them should be equal to each other. So we get 10 equal to -10 -20m. Similarly, जो कांस्टेंट ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर था, that should be the same as this constant that we're getting in the equation below. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, we have -80 equal to -20 times c. यहाँ से आपके पास m और c की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट? सो यू गेट 20m equals -20m की वैल्यू आ गई -1, और इसी तरह से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 एग्जैक्टली। सो दैट्स करेक्ट लाइबा। अभी आप क्या करेंगे, mx plus c था, y equals mx plus c, just input values there. m की वैल्यू -1 है, so that's -x, c is 4, so the equation that we have to equation of that straight line is basically y equals -x plus 4, right? Now it looks like a fairly long process, so generally एक 2 या 3 marks का आता है। But this is something that is going to work in every single case, right? ये हर केस के अंदर ये मेथड आपका अप्लाई हो जाएगा। इस तरह के केसेस के अंदर आपके पास एक कर्व गिवन हो और ये आपके पास लाइन है, अगर आप उस लाइन को y equals mx plus c assume कर लो और आप ये प्रोसेस फॉलो कर लो, it will work in all such cases. Sometimes, so those of you who are good at this, ये इंट्यूशन से आप डायरेक्टली ना आप देख सकते हो, अच्छा मैं इसको मैं किस तरह से चेंज करूं इस इक्वेशन को कि मेरे पास एक साइड पे ये आ जाए, right? So those of you who can do it, that might work for you as well. So I'll quickly show that to you how that process works. That's going to be quicker. Let me show that to you. Lekin not everybody is able to do it that way, right? So let me just warn about that. So for example, हमारे पास एक curve क्या है, y equals x over 20 into x square minus 10. So मैं simplify कर लें, हमारे पास क्या आता है, x cube over 20 minus 10 over 20, or that's just, 10x over 20, in fact 10x over 20. ये हमारे पास original curve थी, this is the original curve, okay? अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी x cube plus 10 times x minus 80 equals 0. आपने क्या करना है, इसकी एक साइड को किसी तरह से चेंज करना है कि इसमें ये आ जाए, एक साइड एग्जैक्टली ये बन जाए किसी तरह से। हाउ कैन यू डू दैट? एक तो आपको पता है 20 से डिवाइड हो रहा है सब कुछ, पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दें, x क्यूब over 20 plus 10x over 20 minus 80 over 20, ठीक है? अब दूसरे तो 0 है, 0 over 20, that's just going to be 0, ठीक है? That's the first step that you do. ये आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, 20 से डिवाइड कर दिया, अब ये x क्यूब over 20 तो आ गया आपके पास, ठीक है? क्या वो क्या करना आएगा, आपको देखना होगा कि so let me actually take it to the side here. So अगर मैं let me actually do it on the next page. So you have this equation, y equals x cube. Where did you see that? Y equals x cube over 20 minus 10x over 20 and x cube plus 10x minus 80, x cube plus 10x minus 20 equals 0. Yeah, so let me actually explain that again. You've got this curve, आपको एक साइड के ऊपर ना वो चाहिए, exactly that thing. What can you do? आपको पता है 20 से डिवाइड हुआ है,
आप पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दो, राइट? So x cube over 20 plus 10x over 20, sorry this was 80 actually, minus 80 over 20, that is equal to 0. ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, 20 से डिवाइड कर दिया, राइट? दैट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन डू. अच्छा, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. हमारे पास आ गया x क्यूब ओवर 20 प्लस x ओवर 2 माइनस 4 इक्वल 0. ये हमारे पास आ गया यहाँ पे. अच्छा, अब हमें यहां से जाना है इसके ऊपर. 10x over 20 का क्या मतलब था यहाँ पे बोला, दिस वाज x over 2, we have x over 2 here. अब हमारे पास ये आ रही है फॉर्म, ठीक है. हमें जाना किसके ऊपर है, हमें जाना है इसके ऊपर x क्यूब ओवर 20 माइनस x ओवर 2 के ऊपर. इसको किस तरह से चेंज कर लें कि हमारे पास ये आ जाए. हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें ये करना पड़ेगा इक्वेशन के दोनों साइड्स के ऊपर 4 ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये -4 प्लस 4 होके 0 आ जाए हमारे पास. कांस्टेंट कोई भी नहीं है नीचे. x ओवर 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, x ओवर 2 को माइनस x ओवर 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. x ओवर 2 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें माइनस x ओवर 2 मिल जाएगा, माइनस x सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज 1 ओवर 2 को आपसे आपने जाना है -1 ओवर 2 के ऊपर. तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 ओवर 2 में से -1 करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद x लगा लो, तो यू गेट -x देयर. यहां से आपके पास दूसरी साइड पर वो आ जाएगा y इक्वल्स -x + 4. This thinking is sometimes quicker to do. आप एक साइड उस तरह वो बना ले, but most people find it a bit more difficult. तो आप इस तरह के केसेस में, आपको स्ट्रेट लाइन का बताया उसने कि दूसरी एक स्ट्रेट लाइन है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने उसको y इक्वल्स mx + c सपोज करना है और उन दोनों को इक्वेट कर देना है, सिंपलीफाई करके आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी. ठीक है. अच्छा मनाहिल, where do we get -20 -10 -20 m from? हमारे पास ये देखे ना इस स्टेप के अंदर ये फॉर्म आ गई थी. ठीक है. व्हाट वी वांट इज, हम x क्यूब का कोएफिशिएंट अलग रखना चाहते हैं. वी ऑलरेडी हैव दैट सेपरेट. x क्यूब का तो सिर्फ एक टर्म है, x वाली दो टर्म्स आ रही हैं. वी गॉट वन x हियर एंड अनदर x हियर. तो हम क्या करते हैं, हम x को कॉमन ले लेते हैं. हमने x को बाहर कॉमन ले लिया ताकि हमारे पास x का पूरा कोएफिशिएंट आ जाए. जब हम x को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, वी हैव -10 एंड -20 m. ये हमारे पास बच गया. बाकी that's where this is coming from. x को कॉमन लेंगे इसके अंदर से, we get -10 -20 m. Okay, all right. अच्छा Saad, let's do some more relevant things before that. अच्छा Asar, yeah, so we are just going to end in about 10 minutes, so there is time for Asar inshallah. So we'll just end in about 10 minutes. Okay, 10 to 15 minutes. अच्छा, अब उसके बाद तो क्या कहते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लाइन एल. आपने सिर्फ लाइन को ड्रॉ कर देना है, बाकी पार्ट्स तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है. तो y इक्वल्स -x + 4. ठीक है. सो दैट्स योर स्ट्रेट लाइन. ये आपने ड्रॉ कर देनी है. उसके ऊपर ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे, उनको ज्वाइन कर देंगे. तो कहते हैं हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन. अब जो भी उस लाइन का और इस कर्व का जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, यू विल जस्ट राइट देम हियर. तो आपके पास सॉल्यूशन हो जाए. ठीक है. तो ये वाला पार्ट मुश्किल होता है कि आपने किस तरह से फिगर आउट करना है, ये लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है. फॉर इंस्टेंस, नाउ लेट्स डू अनदर सिमिलर पार्ट टू दिस. So again, I am going to look at these specific parts. Okay, ये ज़्यादा मसला करते हैं, and of course we will do most practice possible for practice tomorrow inshallah. ऊपर क्वेश्चन हम कुछ कल करेंगे इंशाल्लाह बाद में, but let's do these specific parts for today. ये ज़्यादा complicated होते हैं. वालेकुम अस्सलाम. I can't even read your name. यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है? Inshal. Okay. It's hardly readable. Okay, let's have a look at this. So again, what we have is इस क्वेश्चन के अंदर से क्या किया, हमसे उसने ये वाला ग्राफ ड्रॉ करवा लिया पहले. y इक्वल्स x² प्लस x माइनस 3. ये ग्राफ उसने ड्रॉ करवा लिया. ठीक है. अब उसके बाद वो कहता है दिस इक्वेशन
can be solved by drawing a straight line on the graph of this. इस ग्राफ के ऊपर एक straight line बना के आप ये equation solve कर सकते हो. ठीक है? Again, how do you think about this? We've got x square minus x minus 1. अब इसका वही दो तरीके. अब इस straight line को आप suppose कर लो. Let's say this is y equals mx plus c, right? Let's say straight line जो है इसकी equation y equals mx plus c है. आप उसको उसी तरह कर लो, y equals mx plus c suppose कर लिया, इनको equate कर दिया दोनों को. So you have x square plus x minus 3 that's equal to mx plus c. Take everything to the left side, you get x square plus x minus mx minus c minus 3 equals 0. Right? अब x square बाहर आ गया, x को common ले लिया ताकि x का coefficient आ जाए. We've got 1 minus m times x minus c minus 3 equals 0. What was the equation that we were given? हमें ये equation given थी, y equals x square plus x minus 3. वो equation given थी. आप क्या करोगे? आप उसको इसके साथ compare कर लोगे. Sorry, x square minus x minus 1 equals 0. वो equation given थी. X square plus minus x minus 1 is equal to 0. All you have to do is you just compare the two. X का coefficient ऊपर क्या आ रहा था हमारे पास? हमारे पास आ रहा था plus 1 minus n. उसके पास क्या आ रहा है? उसके पास आ रहा है minus 1. अच्छा, इसी तरह कांस्टेंट हमारे पास क्या है? उसके पास क्या है? हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है minus c minus 3. उसके पास कांस्टेंट क्या आ रहा है? minus 1. Just compare the two. X के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, we get 1 minus m equal to minus 1. कांस्टेंट्स को कंपेयर किया, we get minus c minus 3 equal to minus 1. यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, n will be equal to 2 और c की वैल्यू आ जाएगी, c will be equal to minus 2. आपकी इक्वेशन क्या बन गई जो उसने पूछी थी? y equals mx plus c. That turns out to be y equals 2x minus 2. That is the equation. ठीक है, उसके बाद आपसे वो ड्रॉ करवाएगा और आपसे वो ग्राफिक भी सॉल्व करने का कहेगा. So that's doable. Okay? So इस तरह केसेस में हमने क्या किया? बस आपने लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से. Okay? लाइन इस तरह से फाइंड कर ली, उसको y equals mx plus c सपोज कर लिया, इक्वेट कर दिया और आपके पास वो उसकी इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, इसी में दूसरा मेथड अप्लाई करें तो क्या होता? We will say we start from this x square minus x minus 1 equal to 0 से हमने स्टार्ट किया. हमें चाहिए क्या एक साइड के ऊपर? हमें एक साइड के ऊपर वो फॉर्म चाहिए x square plus x minus 3 equal 0. इसमें वो थोड़ा सा आसान है सोचना. x square और x square इसको तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये तो डायरेक्टली आपको वही आ रहा है. माइनस x से आपने प्लस x पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 2x ऐड करना पड़ेगा. दोनों साइड से आपने क्या किया इक्वेशन के? 2x ऐड कर दिया. अच्छा, -1 से -3 पे जाना है, -1 से -3 पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा. दोनों साइड से -2 कर दिया. This is the equation of the line. So that's y equals 2x minus 2. Right? So again, if you can think like this, that's going to make your process a bit quicker. आपको सारी उस तरह से comparison नहीं करना पड़ेगा. But that's the standard method जो हर केस में आप डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. You just apply that directly. But you can also do it this way. बस ये इक्वेशन गिवन थी, उससे आपने जाना है एक साइड पे आपको ये चाहिए, तो आप ये कर सकते हो उसके लिए. All right, this was actually y there. Okay, तो यहाँ से भी आपके पास वो आ जाएगा y equals 2x minus 2. Okay, all right. Is this clear to everyone? Any issues with this? Any issues with this? So let's do last one for today. And we'll do more tomorrow in the other group, inshallah. एक में वो पूछना, yeah, this one. And then sometimes you have problems like these. Sometimes you have problems like these. Yeah. Okay. So इसने उसने क्या कहा?
उसने आपसे पहले ये वाला ग्राफ ड्रॉ करवाया है, y equals x plus 1 over x. ये ग्राफ उसने आपसे ड्रॉ करवा लिया पहले, ठीक है? y equals x plus 1 over x. This is a graph that you were already asked to draw. ठीक है? उसमें वही वाले प्रोसेस, टेबल कंप्लीट किया, ग्राफ ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट फाइंड किया, all of that has already happened. ठीक है? उसके बाद वो कहता है on another grid, on the grid, वो जो grid उसके पास थी, उसने कहा है कि draw the graph of the straight line that's y equals 4 minus x. ये भी आपने लेक्चर ड्रॉ कर दी, 4 minus x is a straight line. आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स लेने हैं. You just explain that process as well. X and y, take any 2 points. X की वैल्यू कोई आप जो भी आपको x की वैल्यूज की रेंज आ रही है उसके दरमियान में x की वैल्यूज ले लें कोई, लेट्स से यहाँ पे x की वैल्यू 0 इनपुट करते हैं तो y 4 आ जाता है, x की वैल्यू हम 4 इनपुट कर देते हैं तो y 0 आ जाता है. इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे, आपके पास ये लाइन ड्रॉ आ जाएगी. ठीक है, लेट्स से वी डन विद दैट. द नेक्स्ट पार्ट आपसे वो क्या कहता है, राइट डाउन द x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स 4 minus x एंड दीस इंटरसेक्ट. तो आप ग्राफ से देख लेंगे जहां पे वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर इतना. अच्छा, अब वो जो लास्ट पार्ट है वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ which of these find the equation for which these x values are the solutions. Give your equation in this form. इस फॉर्म के अंदर आपको वो इक्वेशन बतानी है इसके ये x वैल्यू सॉल्यूशन होंगी. अब ये क्या x की वैल्यूज हैं? These are the points of intersection. Points of intersection का क्या मतलब होता है? Point of intersection का क्या मतलब होता है? आपने क्या करना है, जो दो इक्वेशंस हैं आपके पास उनको आपने इक्वेट कर देना. y equals 4 minus x and y equals x plus 1 over x. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. 4 minus x equals x plus 1 over x. तो आपने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है जो उसने कहा हुआ था. Just take everything to the left side. पहले x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन खत्म हो जाए. We have 4x minus x square equals x square plus 1. We've just multiplied the whole equation by x, right? ताकि वो फ्रैक्शन खत्म हो जाए. We get 4x minus x square. Let's now take everything to the left side. We get 4x minus x square minus x square minus 1 equals 0. And this gives me minus 2x square plus 4x minus 1 equals 0. यहाँ पे अगर x square का अगर पॉजिटिव बना दें, we get 2x square minus 4x plus 1 equal to 0. ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई जिसके वो सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, अब यहाँ पे वो आपसे पूछ सकते हैं a, b और c की वैल्यूज बताएं. तो a, b और c की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? a will be 2, b will be minus 4 and c will be plus 1. Right? This is b, this is a, this is c. ये आपके पास a, b और c की वैल्यूज हैं. ठीक है, मुबशिर, we are multiplying the whole equation by x, right? अब राइट साइड के ऊपर आप देखिए हर टर्म x से मल्टीप्लाई हो रही है ना. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तब कर सकते थे अगर हमारे पास ये पूरे के नीचे x होता, राइट? दोनों क्योंकि अलग अलग टर्म्स है, हमने x को सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई किया, ये 4x आ गया, माइनस x से मल्टीप्लाई किया, माइनस x स्क्वायर आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, 1 over x को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 आ गया. राइट? तो हर टर्म को अलग अलग x से मल्टीप्लाई करना. That's what you get. Another way is what Inshal suggested. आप पहले LCM ले लेते. 4 minus x equals x square plus 1 divided by x. Right? You could also do that. And then you could multiply x on the other side. फिर आप उसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते. That would be okay. Yes, Mubashir, x multiplied by 1 would be x. Yes. लेकिन फिर वो x से डिवाइड भी तो हो रहा है ना. तो अगर अभी लास्ट टर्म की बात कर रहे हो, that will be x into 1 over x. ये कैंसिल हो जाते हैं. We're just left with 1 here. सिर्फ 1 रह जाता है. Okay. These are the values of a, b, and c from there. Okay. So this is another type that you get sometimes. आपको वो a, b और c की वैल्यूज फिगर आउट करने में कहता है. यहाँ पे तो सिर्फ उस फॉर्म के अंदर आपको निकालने को कहा था. कभी-कभी आपसे a, b और c की वैल्यूज. Okay, so we'll do more past paper practice tomorrow, inshallah. We will do more questions, but that's going to be on the other group.